Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home and are doing well. As you all know, in our previous video we have discussed about many concepts of class 9th physics, chapter number 1, that is motion. In our last video we have discussed about the graph, that what is graph and how can we plot the graph by the given data. So in today's video we are also going to deal with the graph concept, but the graph will be of distance time. Okay, so in this video we are going to discuss about the distance time graph, how can we plot the distance time graph, and what will be the analysis that can be do by the using of distance time graph. Without any further delay, let's get started with the first concept, that is distance time graph. So I have told you what is graph actually. I just want to recall the concept. Graph is nothing, it is the geometrical relationship between the two quantities. So right now we are having the two quantities as distance and time. So we can say distance time graph is nothing but it is the geometrical relationship of distance between the distance and the time. Okay, if we are drawing a graph by using the distance and the time data, then the graph is called as distance time graph. Now how can we plot the graph? I have told you, if we want to plot the graph, then we need two axes. Minimum we need two axes. One axis we need as x axis, one axis we are taking, and another axis we are taking as distance axis, second axis that we are taking as y axis. So now one quantity will be plotted on the x axis, that is time we have plotted on over the x axis, and we have plotted distance on the y axis. Why we are doing so? And in the previous video we have discussed that we need to plot the dependent quantity on the y axis and the independent quantity on the x axis. So here the distance in the dependent quantity, so that's why we have taken the distance on the y axis, and time is the independent quantity, that's why we have taken the time as x axis. Now we can draw the distance time graph for various conditions, but I have taken 2 or 3 conditions that will be useful for you and that will be applicable in your syllabus. Not more than that, that will be sufficient for your study of your graph. So let's recall our first condition. I have written over there, the distance time graph for various conditions are given below. So the first condition that we are taking is when the body is at rest. I hope so the concept of rest is very clear to you. What does the rest means? If an object does not changing its position with time, then it is said to be in rest. So now just move to the let's move to the graph over here which is plotted. Right now we have taken the time, okay, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. We have taken the time intervals on the time axis, and we have taken the distance like 5, 10 meter, 15 meter and 20 meter. Distance is in meter. So the object is at 15 meter position. If you are observing the graph carefully, then what you will conclude? You will simply conclude the object is at 50 meter. If the time is 1 second, then it is already on 15 meter. Sorry. If the time is 2, then the graph is the position of the object is 15 meter. If the time is 3, the position of the object is 15 meter. That means whenever the time is changing, but the object is not changing its position. So in that case, this is the graph of the body is at rest. And how does the graph look like? Very simple. The graph will be straight line parallel to the x axis. This is the line which is just parallel to the x axis. So you can easily say, if we are plotting a graph of a body which is in rest, which is at rest, then the graph will be obtained just a parallel to the x axis. I hope so the idea is clear. So let's recall the things once again. क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? कुछ नहीं होता, ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज़ द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़. मतलब दो क्वांटिटीज़ के बीच में क्या होता है, हम उनको पिक्चर की फॉर्म में या ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे. ठीक है, ग्राफ की हेल्प से. तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो भी रिलेशन होगा, अगर आप उस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो तो जो ग्राफ ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ केवल डिस्टेंस टाइम या स्पीड टाइम के लिए ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटीज़ के बीच में ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा ग्राफ डिस्कस करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो हम कौन सी क्वांटिटीज़ लेंगे, कौन सा रिलेशन लेंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो भी वेरिएशन होगा उसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा. क्लियर है? ठीक है, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. दो क्वांटिटीज़ हैं तो दो एक्सिस चाहिए, एक आपने एक्स एक्सिस ले रखी है, वाई एक्सिस ले रखी है.
डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैसी क्वांटिटी है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हमें कहाँ लेना होता है? उन्हें हमें लेना होता है वाई एक्सिस पे, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें कहाँ पे लेना होता है? एक्स एक्सिस पे। तो हमने वही किया है यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अपनी पोजीशन पे ही फिक्स है। जैसे यहाँ पे देखो, ये ओरिजिन क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से अगर हमारी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन फिक्स है, मतलब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसकी पोजीशन क्या है? चेंज नहीं हो रही है। टाइम चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 टाइम है तभी पोजीशन फिक्स है, 2 टाइम है तभी पोजीशन वही आ रही है, 3 पे वही आ रही है, 4 पे वही आ रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, बट हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन 15 मीटर ही है। मतलब क्या है? वो रेस्ट में है। तो इस केसेस में क्या होगा? हमारा जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट, जो भी रेस्ट में ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके लिए जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको क्या करना है? हम कुछ नहीं करना है, सिंपल कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। आई होप सो द आइडिया इज क्लियर। जरूरी नहीं है कि 15 पे ही हो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ पोजीशन पे होगा। जैसे जहाँ से आप, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ या यहाँ खड़ा हूँ मैं ऑब्जर्वर, यहाँ पे हूँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ से, तो जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, चाहे वो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है या कहीं भी हो सकती है, तो जिस भी फिक्स्ड पोजीशन पे होगा पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ में। अगर पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो वो रेस्ट में नहीं होगा, मोशन में होगा, ठीक है? बट हमें कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है? रेस्ट वाला ड्रॉ करना है। तो रेस्ट वाले के लिए क्या होगा? हमारी जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या होगी? फिक्स्ड होगी। आई होप सो द आइडिया इज क्लियर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट taking a side. Now you can take the screenshot, either you can make the parallel notes, that will be more beneficial. And please watch the complete video till the end so that all the concept will be very clear. So now recall the second condition. Just wait. First condition was whenever the object is at rest. Second condition will be whenever the object will be in uniform motion. Just wait. Second condition will be when the object moves, when the object moves, sorry, it's not a object, when the object moves uniformly, when the object moves uniformly, or you can say when the object is in uniform motion. So let's recall the concept first. Now we need to draw a graph. For drawing a graph we need how many axes? 2 axes we need. Once we are plotting distance over here, like distance, okay, and on this time axis, on the x axis we are plotting as time. So time will be in second and distance will be, let's suppose, in meter. Okay, so let's draw. This will be origin, the intersection point 1 2 3 4 5. So we have taken 1 second, 2 second, 3 second, not it. So just now 5 seconds. Let's take 5 second, 10 second, 15 second, 20 seconds, and 30 seconds. So we have taken the time intervals of 10 second each, like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30. So if the distance is just 1 meter, so you can say distance is 2 meter, distance is 3 meter, and distance is 4 meter. Right now this is the distance covered by the object. Okay, uniform motion means whenever an object traveling same distances in same time interval, then this kind of motion is called as uniform motion. So what we are doing in this graph, we are plotting a graph of that object which is having a uniform motion, okay, which is moving uniformly. So if the object covers same distance in same time interval, that means we have taken the time interval as 0 to 5. So in the first time interval it is traveling, let's suppose, 1 meter. Okay, so in the next time interval it will also travel the same distance, that is this 2 meter, and in the third time interval, that is 5 seconds, 15, so it will travel a same distance just like this. Okay, just like this is. And in the fourth, if we are talking about the fourth interval, that is 0 to 20, it was here now, so it will cover a same distance, that is this. Now if we are
just joining these points, then what we are getting? We are getting a straight line. We are getting a sloping straight line, and the slope is upward. So what will be the graph? The graph will be, we are writing over here, the graph will be a straight line, the graph will be straight line sloping upwards, okay. Or you can say the graph is increasing straight line, making an angle with the x-axis. That's very simple. I hope so the idea is clear. When the object move uniformly means the object should cover equal distance in equal time interval. So let's recall the graph once again. We have taken the interval of 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30. Okay, you can write like this, not 30. We are taking the 25. Now we have taken the distance of 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. So in the first time interval 0 to 5, it is covering distance of 1 meter same, and in the next time interval of 5 seconds, it should cover the equal distance. Then it will be covering the 1 meter. That means it was earlier it was at 1. So after covering a distance of 1, it will just approach to the point 2 meter. Okay. In the next third second, it is covering a distance of 1 meter, that is 3. In the next 15 to 20, it is covering a distance of, that is 1 meter, that is it is approaching towards 4. So after plotting these points, we have just drawn the graph. So what we are getting? We are getting a straight line. Okay, you can also write like this: straight line making an angle with x-axis, making an angle with x-axis, making an angle with x-axis. What you can write like this? A straight line making an angle with x-axis. Either what you can write, you can simply write the graph will be a straight line sloping upward. I hope so the idea is clear. So let's recall these things once again. अभी हमने क्या किया है, कौन सी कंडीशन ले रखी है? जब ऑब्जेक्ट हमारा कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने जो टाइम इंटरवल्स ले रखे हैं वो 5 सेकंड्स के ले रखे हैं ईच, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 50 to 20, 20 to 25, ये इंटरवल्स ले रखे हैं हमने। अब ये 5 सेकंड में 0 to 5 सेकंड फर्स्ट इंटरवल में 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो जो नेक्स्ट इंटरवल होगा 5 to 10 वाला, उसमें भी 1 ट्रेवल करना चाहिए, तो उसमें भी इसने 1 ही ट्रेवल किया, 1 से 1 जाएगा 2 होगा, ठीक है। फिर 15 to 20 वाले में क्या किया है इसने फिर 1 मीटर ट्रेवल किया है, तो 3 पे आ जाएगा ये। फिर 15 to ये वाला इंटरवल है लास्ट, तो इसमें 1 हर इंटरवल में वो कितना ट्रेवल कर रहा है? 0 to 5 सेकंड्स के इंटरवल में वो 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, मतलब सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसकी मोशन कैसी होगी? यूनिफॉर्म। और इसको हमने प्लॉट किया तो कैसी लाइन आ रही है? स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स। क्लियर है इतना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप क्या किया करो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करिए, देन आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। ओके, and please watch the complete video so that all the concept of this graph, distance time graph, will be clear to you. I hope so you have taken the screenshot. So should I erase this one and move to the next topic? That's just wait. So next topic is when the object is moving non-uniformly. So non-uniform motion है ऑब्जेक्ट का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, थर्ड कंडीशन है when the object moves non-uniformly. Non-uniformly, I have told you, whenever it is covering different distances in different time interval. So in this condition there are two cases arises. First case is case 1, when the speed is non-uniformly increasing,
increasing. Just wait. Okay, so everything will be clear, don't get worried about that. So when the object is moving non-uniformly, in the first condition, first case we have taken, the speed of the object is continuously increasing. So what we are getting over here, so we need to plot the graph over, this is the distance. Okay, distance is always plotted on the y-axis and time is always plotted on the x-axis, and time will be in seconds, distance will be, you can say, in meter. Now if we are plotting a graph of the object which is moving non-uniformly and the speed is increasing continuously, so what will be the graph? Graph will be like this, just like that. Okay, what it called? This is a curve. Okay, the graph will be, we can write that, the graph will be, just wait, the graph will be a curve, will be a curve whose slope increases with time, increases with time. So what happens when an object is moving non-uniformly with the continuously increasing speed? Then we are getting this kind of graph. So wait, clear? Okay, sorry. So we are getting this kind of graph. So right now, if you are observing the slope from here, like this, slope is continuously increasing. This is the slope. Okay, slope means the angle, the graph which makes the angle from the x-axis. So in this case, the slope is continuously increasing. So this will be the graph for the object moving non-uniformly. I hope so that it is clear. So let's recall this once again. अभी हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को कौन सा मोशन लिया है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिया है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है. देखते हैं कैसे होगा. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है. व्हेन द दो केसेस हो सकते हैं, अगर स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है या तो आपकी डिक्रीज हो रही है. जैसे आप जा रहे हो कंटिन्यूसली, आपको कहीं जाना है, हाईवे पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, आप घर से निकले, आप बहुत जल्दी में हो, तो आप क्या करोगे, अपनी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज करोगे. पहले 0 होगी, फिर 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, कुछ भी स्पीड होगी, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. कभी आप स्लो भी करोगे, फास्ट भी करोगे. तो आपकी स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, आप सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे, कभी कम कर रहे हो, कभी ज़्यादा कर रहे हो. तो स्पीड अगर चेंज हो रही है तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ विल बी अ कर्व हुज स्लोप इंक्रीजेज विद टाइम. ग्राफ कैसा आएगा? कर्व आएगा जिसकी स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी. क्लियर है ये? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट कर सकते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए. ठीक है, सो दैट वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. या जस्ट वेट. सो इन द नेक्स्ट केस वी आर जस्ट taking another example. When second condition will be when the speed of the object is continuously decreasing, it is moving non-uniformly, and when the speed of the object is non-uniformly decreasing, that means in this case the object is having a non-uniform motion, but its speed will be continuously decreasing. So let's plot the graph and try to analyze that how does the graph look like. That is distance, very simple, that is distance, and this is the time one. X-axis is always regarded as time axis, and the y-axis is always regarded as the quantity which is independent. So distance is dependent quantity. In this case the graph will be just like this curve. Okay, so this will be the graph. And how can we describe this graph? The graph will be a curve. The graph will be a curve whose slope decreases with time. Whose slope decreases with time. Okay, so if we are plotting the graph of a body which is moving non-uniformly and the speed is continuously decreasing, then what we are getting? We are getting a simple curve. This kind of curve we are getting, and in this case the slope is continuously decreasing. I hope so the idea is clear. Okay, so let's recall once again. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या होगा. बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको. जो भी हमारा होगा इसमें हम क्या करेंगे, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है,
नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगा तो देखते हैं क्या आएगा। हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रहा है मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा सेम टाइम इंटरवल में। यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको पहली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा सेम टाइम इंटरवल में। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा, सिंपली कर्व आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग वाले में भी कर्व आएगा, डिक्रीजिंग वाले में भी कर्व आएगा। दोनों ग्राफ लीनियर नहीं हो सकते, कर्व आएंगे, बट कर्व का शेप आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जब ओलंपियाड्स वगैरह में अपियर हो गए तब भी क्वेश्चन पूछता है। ग्राफ बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आपने ग्राफ प्रॉपर स्टडी नहीं किया हुआ है तो आप उनको आंसर नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, I hope so. This is all about your today's video. I think everything is clear to you. Okay, if you like the video then please hit the like button. If you are new to our channel then please subscribe to our channel and please share the video as much as possible because we need your love and support. Without your love and support we cannot do anything. So please share this video as much as possible and please thank you so much for watching this complete video. Thank you so much all of you once again.